Dear students, I'm in position to talk about the current electricity. First, we should note that electric current, electric circuit, voltage or electric potential, resistance and Ohm's law, resistivity, combination of resistors, heating effect of current and electric power. These points should be discussed today. Once again, listen carefully to what are the learning outcomes expected from this chapter. First of all, about the electric current, electric circuit, voltage or electric potential, resistance and Ohm's law, resistivity, combination of resistors, heating effect of current and electric power. First of all, we should know about the electric current. The flow of electric charge is known as electric current. Electric current is carried by moving electrons through a conductor. By convention, electric current flows in the opposite direction to the movement of electrons. Electric circuit. Electric circuit is a continuous and closed path of electric current. I hope electric current is quite clear to you. Very simple. The flow of electric charge is known as electric current. Electric current is carried by moving electrons through a conductor, because when you will say that flow of electric charge is current, then automatically question comes in mind, what is charge? Then you will answer flow of electron, the flow of number of electrons. If we assimilate two sentences or two concepts in one, then I can say that flow of electric charge is electric current. And electric current is carried by moving electrons through a conductor. An electric circuit is a by convention electric current flows in the opposite direction to the movement of electrons. An electric circuit is a continuous and closed path, continuous and a closed path of electric current. Now, discussion about expression of electric current. Electric current is denoted by the letter I. Electric current is expressed by the rate of flow of electric charges. Rate of flow means the amount of charge flowing to a particular area in unit time. Suppose that this is a cell, positive terminal, and this one is the negative terminal. Charge flows like this in this direction. Flow of electron in this direction. Then if a net electric charge Q flows through a cross section of a conductor in time t, then electric current I is equal to Q by T. I is equal to Q by T, where I is electric current and Q is net charge and T is a time in second. SI unit of electric charge and current. SI unit of electric charge is coulomb. 1 coulomb is nearly equal to 6 into 10 to the power 18 electrons. SI unit of electric current is ampere. Ampere is the flow of electric charge through a surface at the rate of 1 coulomb per second. This means if 1 coulomb of electric charge flows through a cross section for 1 second, it would be equal to 1 ampere. Therefore, 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second, means 1 coulomb per second. A small quantity of electric current, is expressed in milliampere and microampere. Milliampere may be written as a small m and capital A, and microampere PA.
1 milliampere is equal to 10 to the power of minus 3A, and 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6A. 10 to the minus 6. Minus 6A. Yes, I have told don't to cry. If someone has opened his microphone, please mute. Ammeter, an apparatus to measure electric current in a circuit. Ammeter is a device that measure electric current in a circuit. And charge, like mass, the charge is the fundamental property of matter. There are two types of charge, positive charge and negative charge. Positive and negative charge. The charge acquired by a glass rod when rubbed with silk is called a positive charge, and the charge acquired by an ebonite rod when rubbed with wool is called negative charge. Mind it. This one, a glass rod when rubbed with silk. हमेशा याद रखेंगे, कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, एंड एबोनाइट रॉड को अगर हम लोग उल पर रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है. इसे स्टैंडर्ड माना गया है. सर एबोनाइट रॉड क्या होता है? एबोनाइट रॉड जैसे सिल्क रॉड होता है, इन लैब यू विल सी. लिसन, प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे ग्लास रॉड है ना, उसी टाइप के एबोनाइट एक मटेरियल है जो मिक्स किया हुआ है, उसी से वो रॉड बनता है. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस repel each other. This is the properties of electric charge. First है, unlike charges attract each other and like charges repel each other. Repulsion takes place positive charge to positive charge or negative charge to negative charge. The force between two charges varies directly as the product of two charges and inversely as they square the distance r between the charges q1 and q2. Means that q1 into q2 by r square. You can say by this expression f is directly proportional to q1 q2 by r square. और अगर इनको कन्वर्ट करें इक्वल टू को इक्वल प्रोपोर्शन टू को इक्वल टू में, तो कांस्टेंट विल बी एडेड k. f is equal to k q1 into q2 by r square. ये r2 नहीं है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक्स है, r स्क्वायर है, ये सुपर स्क्रिप्ट में जाएगा. R2 नहीं समझेंगे, Q1 into Q2 by R square. SI unit of charge is coulomb. 1 coulomb is equal to 1 ampere into 1 second. 1 ampere into 1 second. Thus, the quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second is known as 1 coulomb charge. Now, the discussion comes to electric potential and potential differences. Electric potential is the amount of electric potential energy at a point is called electric potential. Or you can say that for electric potential is a kind of work done to bring an unit charge from infinite to the specific point. Electric potential अनंत से किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में जो किया गया कार्य है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसीलिए इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी कह रहा हूं. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज. इसको डिफाइन वोल्टेज में ही टर्म किया जाता है, which is equal to the amount of work done. देखिए बात यहाँ आ गई, work done to the move the unit charge between 2 points against the state electric field. Therefore, voltage is equal to work done by charge. Voltage or electric potential difference is denoted by V, and therefore V is equal to W by Q, where W is equal to work done and Q is equal to charge. Like this. SI unit electric potential difference is volt
and denoted by V. This is named in honor of Italian physicist Alisonado Volta. Volta के नाम पर ही इसका नाम रखा गया volt. Since Joule is the unit of work and Coulomb is the unit of charge, so 1 volt of electric potential difference is equal to the 1 joule of work to be done to move a charge of 1 coulomb from one point to another in an electric circuit. Therefore, 1B is equal to 1 joule per 1 coulomb. 1 joule per 1 coulomb. The 1B is equal to 1 joule coulomb inverse 1. Like ammeter, another device, voltmeter, and apparatus to measure the potential difference or electric potential difference between 2 points in an electric circuit. ammeter से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, electric potential difference between 2 points in electric circuit. And another device, galvanometer, it is a device detect current in an electric circuit. आप देखिए ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. सो गेट बाय हार्ट कहीं भी चले जाइए ओम्स लॉ, लोग इलेक्ट्रिक करंट में अगर कुछ पूछते हैं तो ओम्स लॉ को बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है. Law states that potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at a constant temperature. Ohm's law states that potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current. Or in short, you can remember this, V is directly proportional to I. और proportional को साइन अगर हटाएंगे इक्वल टू में लाएंगे तो यहाँ पर R जुड़ जाएगा. V इज इक्वल टू आर आई या आई आर, दोनों में से कोई आप बोलिए. I इज इक्वल टू V बाई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई. ये दोनों इसी से हमको इक्वेशन निकल रहा है. Where R is constant for the given conductor at a given temperature and is called resistance. R is called resistance, which is constant. R resistance is the property of a conductor which resists the flow of electric current through it. Now we should talk about the SI unit of resistance is ohm, OHM. Always remember, ohm is denoted by Greek letter this. 1 ohm of resistance R is equal to the flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having a potential difference equal to 1V. Now, this means 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. From the expression of Ohm's law, it is obvious that electric current through a resistor is inversely proportional to resistance. Clear कर रहा है कि electric current through a resistor is inversely 1 by R resistance. If this means electric current will decrease with an increase in resistance. Resistance को बढ़ाइए, current घटेगा. The graph V potential difference versus electric current is always a straight line. यही आएगा, always a straight line. देख रहे हैं ना, ये सीधा जा रहा है. ये resistance, ये आपका potential difference इस पर V है, यहाँ इस पर प्लॉट किया गया electric current को. And the value is constant for given conductor. Resistance is a property of conductor due to which it resists the flow of electric current through it. A component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called resistor. In practical applications, resistors are used to increase or decrease the electric current. One is variable resistance, the component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from source is called variable resistance. Rheostat, this is a device which is used in a circuit to provide variable resistance. Rheostat भी याद रखना, जैसे ammeter, galvanometer, voltmeter, एक डिवाइस rheostat, इसको भी याद रखना है. This is a device which is used in a circuit
provide variable resistance. Now, causes of resistance in a conductor. The flow of electron in conductor is electric current. The positive particles of conductor create hindrance to flow of electrons because of attraction between them. This hindrance is cause of resistance in the flow of electricity. Factors on which resistance of a conductor depends. Factors on which resistance of a conductor depends. Resistance in a conductor depends on nature, length, area of cross section of the conductor. Mind, what are the factors affecting the resistance? Number one, resistance in a conductor depends on nature, property of the material, length, and third area of cross section. यानी 3 points हो गए. तो first क्या मिला? Nature of material. Some material create least hindrance and hence are called good conductors, like silver. Silver is the best conductor of electricity, while some other material create more hindrance in the flow of electric current, flows of electron through them. Such materials are called bad conductors. Bad conductors are also known as insulators. Hard plastic is one of the best insulator of the electricity. Like this, length of conductor. Resistance R is directly proportional to the length of the conductor. This means resistance increases with increase in length of the conductor. This is the cause of the length. Electric wires create more resistance to the electric current. Thus, resistance R is directly proportional to length of the conductor. Or you can say R is directly proportional to I. And not I, length होगा जी यहाँ पर, I नहीं, length होगा, sorry. Length of the conductor, L. Area of cross section. Resistance R is inversely proportional to the area of cross section A of the conductor. This means R will decrease with an increase in the area of conductor and thus decrease the resistance. This is called that thick copper wire create less resistance to the electric current. Thus resistance R is directly proportional to L by A. L means length of the conductor and this one is the area of the cross section. Combining two in one, do two equation into one. You can write R is directly proportional to L by A. और जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक और लगेगा कांस्टेंट, दैट इज रो, दैट इज कॉल्ड रो. देख रहे हैं ना, ये पी नहीं है, रो है. R is equal to रो into L by A. रो RHO ऐसे लिखेंगे. Proportionality constant. It is called the electrical resistivity of the material of conductor. From equation, RA is equal to रो into L. रो into RA by L. ऐसे करके निकाल लेंगे इक्वेशन में. SI of resistivity, since R is Q, SI unit of area in meter square. तो अल्टीमेटली जब आएंगे तो इनका यूनिट हमको रेसिस्टिविटी का उल्टा मिलेगा, ओम मीटर स्क्वायर बाय एम. एम कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर. SI unit of resistivity is rho, that is ohm meter, equal to ohm meter. रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces. Its SI unit ohm meter. Resistivity rho is equal to R into A by L. Resistivity is also known as a specific resistance. Resistivity depends on the nature of the material of the conductor. Materials having resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter are considered as a very good conductor.
silver has resistivity equal to 1.60 into 10 to the power minus 8 ohm meter, and copper has resistivity equal to 1.6 into 10 to the power minus 8. ये इसका देखिए 60 था, इनका 1.62 है, इतना ही का अंतर है सिल्वर में और कॉपर में. Rubber and glass are very good insulators. They have resistivity in the order to 10 to the power minus 12 ohm meter to 10 to the power minus 8 ohm meter. The resistivity of material varies with temperature. Temperature affect करता है. Combination of resistors, series and parallel combination of electric current and electric power. Combination of resistors, series combination, and this one is parallel combination. और दोनों को मिला दो तो mix combination भी बनेगा. This one is, see this, resistors in series, resistors in series combination. First, when resistors are joined from in to in, it is called in series. In this case, total resistance of the system is equal to the sum of resistance of all resistors in the system. Like this one, R1 connected with this R2 and this R3. यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस हम लोग एक साथ जोड़े हुए हैं एक ही लाइन से, इन टू इन. This combination or circuit is known as series combination. Let the resistors R1, R2 and R3 get connected in series. Potential difference across A and B. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A पॉइंट यहाँ है और B पॉइंट यहाँ है. इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही ना V है. चलिए अब आइए, पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 एंड R3 इज इक्वल टू, सब में जाएगा V1, V2, V3, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है. तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन 1, वी गेट दैट V1, V2, V3 तीनों को ऐड कर दीजिए और उधर से ले लीजिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 I2 IR2 हो गया, है कि नहीं. करंट तीनों में एक ही जा रहा है. V3 बराबर IR3 हो गया. अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेटेस्ट टोटल रेसिस्टेंस RS निकालने के लिए सब में से भी देखिए है ना, V बराबर IRS कर देंगे हम लोग. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर देखा जाए तो IRS बराबर क्या मिलेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, I तीनों में कॉमन है, एक यहाँ से यहाँ सबको काट दीजिए, I सबका कट गया तो क्या बचा, RS बराबर क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3. इस तरह से इसका डेरिवेशन भी आप निकाल सकते हैं. आइए, रेसिस्टेंस इन पैरेलल. When resistance are joined parallel, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of resistors. See this, यहाँ भी देखिए करंट सप्लाई यहाँ से हो रहा है, ए पॉइंट ए है और ये बी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से भी जा रहा है. लेकिन देखिए ये पैरेलल, R1 पैरेलल टू R2 एंड R2 पैरेलल टू R3, इसको पैरेलल में हम लोग जोड़े हैं. तो ये हमारा सर्किट पैरेलल सर्किट है. अब देखिए, लेट द रेसिस्टेंस इसका निकालिए, R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी बराबर भी पोटेंशियल सम में है. तो टोटल करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बराबर 1 मान लीजिए. आई करंट जा रहा है इसमें, आई करंट फ्लोज थ्रू रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3. I1, लेकिन अब यहाँ करंट देखिए बढ़ जाता है. यहाँ से देखिए जो आई करंट जा रहा है इसी का एक हिस्सा इसमें जा रहा है, इसी का एक हिस्सा इसमें आ रहा है. तो करंट इनका जो होगा I1, I2, I3 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर करंट I बराबर I1, I2, I3 इक्वेशन 1. सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2, R3 भी है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब हम लोग आएंगे तो I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 एंड I3 बराबर V बाई R3 इक्वेशन 2. अब देखिए, लेट द टोटल रेसिस्टेंस RP अगर हम निकाल रहे हैं, I इज इक्वल टू V बाई RP. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को मिला दीजिए V बाई RP निकालने के लिए. तो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3. अब V देखिए सब में है, इसे कॉमन ले लीजिए. तो ये क्या बन गया, 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. In parallel combination, the potential difference across each resistance is the same and is equal to the total potential difference. The total current through the circuit can be calculated by
एडिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर टोटल को करें हम लोग, एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है निकालने के लिए। मान ली 6 है, 48 है, 30 है, प्लस 12 है, 24 है, 24 है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट इश्यूज बचे हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानने के लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानेंगे। क्या है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat and the result resistor gets heated। ऐसे मटेरियल में आपको करंट पास करना है जो प्योरली रेसिस्टिव हो, तभी वो करंट हीट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो मेल्ट कर देगा। द हीटिंग ऑफ रेसिस्टर्स बिकॉज ऑफ dissipation of electric energy is commonly known as heating effect of electric current. Some examples are as follows. When electric energy is supplied to an electric bulb, the filament gets heated, because of which it gives light. The heating of electric bulb happens because of heating effect of electric current. Cause of heating effect of electric current, क्या cause हो सकता है, रीजन क्या है? Electric current generates heat to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes. Higher the resistance, the electric current will generate higher amount of heat. Thus, generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequence. This heating effect is used in many appliances, such as electric iron, electric heater, electric geyser, etc. These are the heating devices है। अब एक important issue है Joule's law of heating. Electric current I is flowing through a resistor having resistance R. The potential difference through a resistor is V. Then the charge Q flows through the circuit for time T. Thus work done moving of charge Q or potential difference V. W is equal to V into Q. Since this charge Q flows through the circuit for time T, therefore power input P to the circuit can be given by the following equation. P is equal to W by T. P is equal to V. W को अगर हम लोग Q by T में कर दें, है ना, ये देखिए P is equal to V into Q by T. We know electric current I is equal to Q by T. देखिए P बराबर V into I है और I बराबर Q by T है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग Q by T into I, इक्वेशन we get P बराबर V into I, तो P बराबर V into I। यहाँ देखिए, since the electric energy is supplied for time, after multiplying both sides of equation 2 by time, टाइम से गुना कर दिया जाए, तो P into T अगर करते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ VIT हो जाएगा, VIT, तो P is equal to VIT। तो for steady current I, the heat produced H in time T is equal to VIT। H बराबर VIT दे रहा है, H बराबर VIT। We know according to Ohm's law, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, और यहाँ V बराबर ये दिखा रहा है क्या, VIT। अब देखिए यहाँ पर, तो by substituting the value V in equation 3, we get H बराबर IR into IT। यहीं पर हम लोग I की जगह पर इसको रख दिए, IT हो गया, H बराबर I स्क्वायर RT। H is equal to क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। The expression 4 is known as the Joule's law of heating, which states that heat produced in a resistor is directly proportional to the sequence of current given to the resistor, directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor. Now about the electric bulb. Electric bulb. In an electric bulb, the filament of bulb gives light because of the heating effect of electricity. The filament of bulb is generally made up of tungsten metal, having melting point equal to, देख लीजिए कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस पे जाकर पिघलेगा।
इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी एक डिवाइस है. द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ alloys having high melting point. Electric heater and geyser work on the same mechanism. One important question, electric fuse या what is fuse in the electricity chapter, ये पूछा जाता है. Electric fuse is used to protect the electric appliance from high voltage. If any electric fuse is made up of metal or alloy of metal such as aluminium, copper, iron, lead, etc. In the case of flow of higher voltage than a specified, fuse wire melts and protect the electric appliances. एक तरह का ये सेफ्टी डिवाइस है ना. तो अलग अलग एम्पियर का होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5, 10 एम्पियर etc. used for domestic purpose. Suppose if an electric heater consumes 1000 watt at 220 volt, then electric current in circuit क्या हो जाएगा, I is equal to P by V. अब देखिए वोल्टेज दे दिए 1000 और 220 यानी 5.5 एम्पियर का निकल गया. Thus, in this case of 5 ampere should be used to protect the electric heater in the flow of higher voltage. अक्सर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से आता है जी. इलेक्ट्रिक पावर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा देते हैं. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, 1 V into 1A. 1 kilowatt is equal to 1000 watt per hour. 1 kilowatt है ना, पर आवर अगर रख देंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा. ये ट्रेडिशनल यूनिट BOT. Consumption of electricity, electric energy is generally measured in kilowatt per hour. Unit of electricity is kilowatt per hour. 1 kilowatt per hour मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1000 वाट गुने 1 घंटा, नहीं 3600 सेकंड, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 वाट. ठीक है, या इसी को जूल में कन्वर्ट कर दें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया. ठीक है, अभी तक जो हम लोग चैप्टर्स पढ़े उसको हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लें. अभी आपने पढ़ा है किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में. द मटेरियल which can allow the flow of electron through itself is called the conductor. It has a large number of free electrons. It offers low opposition in the flow of current. ये कंडक्टर के लिए बात हुई. और इंसुलेटर किसको कहेंगे, द मटेरियल which does not allow the flow of electron या flow of charge, दोनों कर सकते हैं, itself is called insulator. It has less or no free electron. It offers high opposition in the flow of current. इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आप पढ़े हैं, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रिप्रेजेंटेड बाय I. I is equal to Q by T. अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यूनिट एम्पियर. ठीक है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है. इट इज मेजर्ड बाय आर्म-मीटर. स्केलर क्वांटिटी है, इसको नापते किस चीज से है, तो आर्म-मीटर से नापते. द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या प्रैक्टिकल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, याद रखिएगा. डायरेक्ट करंट जिधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in the electric field is defined as the amount of work done. मैंने बताया था work done है ना, to bring the unit positive charge from infinity, from outside the electric field to that point. V is equal to W by Q. SI unit of electric potential is Joule inverse Coulomb. Ohm's law का भी आपको ये मिला हुआ है स्टेटमेंट. Under the constant physical condition, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. ठीक है ना, V is proportional to I और V is equal to IR. याद रखना है इसको, I is equal to V by R, तब एक दूसरे से निकल जाता है. और इलेक्ट्रिक करंट W बराबर VQ और Q बराबर होता है IT, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर V इंटू IT यानी कि VIT. ठीक है, और यही हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स लॉ में आएगा तो H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर बाय RT.
कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आप देख चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, ये भी याद रखना है, यूनिट इज ओम। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकालते हैं आर, है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 चीजा ऐड कर देते हैं। और यही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में आते हैं तो हम लोग 1/R निकालते हैं, 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, amount of work done to maintain the continuous flow of electric current in the circuit in SI unit is joule। इलेक्ट्रिक पावर भी आप देख चुके हो, E बराबर W/T है ना। आइए, इस तरह से। और वाट, वाट किसका यूनिट है जी, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो अगर आपको, अब मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दे सकता हूं, ठीक है। अब हम असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं और यहीं पर हम शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए।